Okay, ji, welcome back. And we were talking about pre-crisis actions and preparations. When we talk about pre-crisis actions and preparations, I said that there should be a commission which is actually designed to incorporate any happening which is not in the favor of the organization. Once the crisis situation is evolved and you are being exposed to it, we have to see that what we can do after the crisis. So remember that after the crisis the change phenomena would take place, because then you have to basically plan yourself according to the after effects of the crisis. Okay, when you plan yourself, so that would be the change phenomena. So promote positive stories in the media. Now that would be planned. Analyze the management of the crisis, that is planned. Update emergency procedures, and that is planned. Okay, so during the crisis you don't plan, but after the crisis your planning would start again, and that planning would be in the shape of the changes which you need to incorporate to overcome any future further crisis situation. In a nutshell, if I summarize the whole discussion, you have to be prepared. Okay, and it is said that sooner or later you may also be involved in a crisis which will involve a lot of extra work. So what is most likely scenario for you or your service? Are you ready for it or not? So we have to be prepared for any unforeseen event, and that unforeseen event is obviously a part of your risk, and the risks are always to be assessed. Okay, so the crisis may be worse than you expected. Sometimes you think that the crisis would not take the shape of a disaster, but as it is said that it is unplanned, it is unforeseen. So that crisis in the start was minute, but with the gradual period of time that crisis was turned into a disaster. So what you have to do when you are responding to the crisis, we have to say the truth. People and institutions do not like facing and managing crisis. This may lead them into half truths, lies, and evasions, which is not a good practice. What is said to the media, other bodies needs to be updated and consistent. Okay, so your statement should be consistent, your planning should be consistent, your responses to the crisis should be consistent, because if they are not, if there is no consistency in what you are saying and what you are doing, so that would obviously result into the downfall of your reputation. Another important thing which we need to learn from the crisis situation is you have to be visible. If the crisis is major, then commissioner, whoever is commissioned to take actions, needs to be at the site of the crisis quickly and to be visible. Okay, up starting from the crisis in a society and going down to the crisis in an organizational facility, we have to be visible that whosoever is the responsible person and whosoever is the commissioned person. Okay, so failure to show sympathy, and obviously along with that sympathy we have to come up with empathy as well. Failure to show sympathy will be punished by the media, because your reputation would be at stake. We have seen a couple of times that different companies who suffered from different crises in Karachi or in Sindh or in Faisalabad or in any part of the world, if they are not sympathetic, and if they're not present in the facility once the crisis has taken place, so the media would never forgive them. Okay, so failure to show sympathy will be punished by the media and by all members of the public, and can destroy the reputation of the commission as well as the overall organization. Now, the bottom line of the crisis situation is that crises happen more than we imagine. Okay, and many a times it is seen कि हम अपने इरादों के टूटने से बहुत सी चीजों को पहचान पाते हैं, और हमारे बहुत सी बातें जो हमारे इरादे में मौजूद होती हैं एक्चुअली वो सिचुएशन वैसे इवॉल्व नहीं होती. Okay, so they are not always easy to see unless they affect our own lives. Okay, because हमारी एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है कि we don't learn from others' mistakes. Okay, so remember that thing कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स को जब हम स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में जब हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, तो हम
से ये बात एक्सपेक्ट की जाती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी मामले में कोई क्राइसिस सिचुएशन इवॉल्व हुई तो हम उसके बारे में पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले लें। और प्रिकॉशन का वर्ड यूज ही तब होता है कि जब आप उस काम के होने से पहले अपनी हिफाजती तदाबीर वो इख्तियार कर लो। And the people who do not take those precautionary measures, they actually are more vulnerable to convert their crisis into future disasters. Now, there is another interesting concern in crisis management detail, and that is known as the crisis life cycle. Okay, and the crisis life cycle is basically divided into 3 stages. The stage 1 is known as the storm breaks. The stage 2 is the storm rages, and the stage 3 is the storm passes. Okay, and after the storm is gone, then you will be in a situation to plan for your change. Okay, but supposedly that the storm which you are facing is not that simple, and it is taking severity in its occurrence, so that would result into disaster, that would result into emergency situation. Okay, so from here we are going to talk about a little little contents about the disaster management. The basics of disaster response, they are discussed under the concern of emergency support functions, abbreviated as ESF. Okay, so emergency support functions, generally speaking, मैं यहाँ पर एक generic आपके सामने discussion वो रख रहा हूँ, which is not in concern with any particular disaster or in a particular situation. This is basically the general detail of emergency support functions we need to talk about. There are 15 aspects which we have to consider when the organizations and when the industries and when the societies, they are exposed to disaster. Okay, which is obviously the severe form of crisis. So those emergency support functions include, number 1, your facilities and concerns related to transportation, because transportation is one of the major things which would be directly broken down when the disaster would be taking in place. So communication networks, public works and engineering, firefighting, emergency management, mass care, housing and human services, resource support, public health and medical services, urban research and rescue facilities, hazardous materials, उनको रिमूव कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कैसे करना है, एनर्जी क्राइसिस, public safety and security, long-term recovery, and public affairs. These are most important 15 aspects which we need to think about when we are talking about emergency support functions if the crisis turns into a disaster. Now, starting from the micro level and reaching up to the macro level disasters, we have to be talking about these major aspects. Now, what is then disaster management? It is said that the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situations and to provide a framework for helping at-risk persons avoid or recover from the impact of a disaster. ठीक है, CUNY actually came up with this definition of disaster management. I repeat again, the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situations and to provide a framework for helping at-risk persons avoid or recover from the impact of a disaster. And I repeat again, that disaster can occur, na'uzubillah and astaghfirullah, in a small setup, and it can occur in a bigger concern as well. There are certain phases of a disaster when we talk about its theory. So the phases of the disaster would start from the preparation about unforeseen event, which can be severe in its form. Then warning phase comes, and obviously I have written in front of the warning phase that if possible, because sometimes disaster and crisis would not give you the time to issue any warning. So if possible, so warning phase would be there. After the warning phase, there would be the impact when you are actually exposed to the disaster. After the impact, then there would be the requirement for emergency response.
After the emergency response, then there would be the efforts to come up with recovery. And after the initial recovery, then you talk about and think about in terms of rehabilitation. And that recovery and rehabilitation is obviously planned. And that is the point upon which we will be requiring the details of the change. Okay, and we'll be requiring the implementation of the whole requirement in the shape of a project. Okay, so the projects would be taken up to rehabilitate the losses and the concerns related to the disaster. So there are certain components of disaster management. The first component we need to talk about is hazard analysis. Then there is vulnerability analysis. Then there is prevention and mitigation. Then there is preparedness, then prediction and warning, response and recovery. So these are the main concerns of components of disaster management, and I'll be discussing with you some of these components in detail. Now, before I start the components in detail, first of all, look at the concept of evaluating a disaster. Okay, because as I said, a disaster is a severe form of a crisis. So when you talk about evaluation of a disaster, there are three things we need to look upon. One is the phenomenon, which means the disaster type and intensity. Second is the vulnerability, which is predisposition and capacity of local response. And then the impact, which is basically the effect on the population who has actually been exposed to that particular mishap. And this is the equation when we have to calculate the impact of disaster. And the basic equation is that phenomenon into vulnerability is equal to the impact. Now, when we talk about hazard calculation, that hazard analysis is basically based upon these points. The first is that you have to look at the disaster history. Okay, now that disaster, again, I'm repeating it again and again, कि एक organization की facility से लेकर overall organizational concern में this disaster can take place. Okay, so आपके पास precedent records होने चाहिए, आपके पास historical data होना चाहिए कि आपके जो disasters थे वो कब कहाँ क्यों कैसे वो माजी में रूनुमा हुए और मुस्तकबिल के लिए आपने उनके बारे में क्या actions वो लेने हैं. The first point is disaster history. Okay, then second is disaster analysis. Okay, कि जब कोई disaster हो गया तो उसके बाद आप उसको analyze करते हो, and the disaster analysis would range from environmental concerns to epidemiological concerns to meteorological concerns, agricultural concerns, political concerns, and the list never ends because there can be so many types of disasters either at national level or at micro level. Okay, so remember that we are trying to come up with some feed forward controls. Okay, as you know that there are three types of controls: feedback controls, feed forward controls, and concurrent controls. So in this crisis and disaster situation, actually we are focusing upon feed forward controls. Okay, and those feed forward controls would actually desire from us to plan our unseen preparation. Okay, something which is like expected, something which is part of our risk assessment. Okay, and as I said earlier, this all can be happening just in case or if possible scenarios. Okay, because obviously हम बहुत सी unforeseen चीजों को शायद assessment के अंदर भी वो लेकर नहीं आ सकते हैं, right? So hazard analysis हमारे पास एक aspect है जिससे कि हम unseen preparation की बात वो कर सकते हैं. And then there would be vulnerability analysis. And this in vulnerability analysis, again, these are all the grounds available to us to prepare for unseen. Okay, so historical experience, again हमारे पास एक vulnerability analysis का पहला point है. Then community experience, technical evaluation, the land use कितना उसका coverage था, building standards वहां पे किस किस्म के थे, disaster specific vulnerabilities, and so on. There are so many things. Again, हर disaster के हवाले से हमारी जो vulnerability की list होगी, it would be different. उसके बाद हम vulnerability को बैलेंस करेंगे विद मैनेजेबिलिटी. हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जितना भी एक्सपोजर रहा उसमें से वुल्नरेबल एस्पेक्ट्स क्या थे और उनमें से मैनेजेबल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते थे.
Okay, again, for that matter, we need to rely upon the historical precedents. Okay, so vulnerability factors that increase risk, obviously, number of people exposed by the hazard, area covered by the hazard, dose और इंटेंसिटी ऑफ पावर ऑफ द हैजर्ड, टाइम ड्यूरेशन कितना रहा, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या थी, ये सब चीजें वुलनरेबिलिटी के पार्ट हो गए. लेकिन हम यहां पर बात को खत्म नहीं कर देते हैं. We need to focus upon that what are the factors related to the manageability. उनमें से मैनेज क्या हो सकता था. ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट जो है वो एक्चुअली ज्यादा रिलेटेड है विद द मैनेजेबिलिटी. सो फैक्टर्स दैट रिड्यूस रिस्क, दे आर एक्चुअली नोन एज मैनेजेबिलिटी. तो एफ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन, कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके पास क्या थे, उसमें आपके पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लुक अपॉन. knowledge and practices of population, technology available to the population. So ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे हम अपनी मैनेजेबिलिटी को उस एक्सपोजर ऑफ वुलनरेबिलिटी के अंदर यूज करते हैं ताकि हम इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर को वो कम से कम वो कर सकें. Okay, so there are certain factors contributing to disaster impact and severity, and obviously those factors are human vulnerability, then the phenomenon or hazard characteristics, impact सडन था, ग्रेजुअल था, उसमें मैनेजेबिलिटी किस किस हवाले से थी, कौन कौन से रिस्क्स आपको असेस करने चाहिए थे, किन किन नए रिस्क्स का आपको एक्सपोजर हुआ. तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो डिजास्टर इंपैक्ट एंड सेवेरिटी की कैलकुलेशंस में हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो उसमें एज वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द टू एस्पेक्ट्स, हैजर्ड एनालिसिस एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, अब मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन. तो अम्मी ने अपना लाख दे दिया था ना आपको, हवाले से दे तो दिया ना अम्मी ने, बस ठीक. Okay, ji. Sorry for some interruption and inconvenience. Perhaps somebody's microphone was turned on. So we were talking about components of disaster management, and we can just see that a disaster was about to take place, and I have tried to cope up with this disaster by immediately, turning off my slides and switching off everybody's microphone. So that is the practical demonstration that how the disasters and the crisis can always take place. And I should have, muted the microphones initially. And if I have not done that, so obviously my recording is like, was on direct exposure to some disastrous situation. So components of disaster management, the next point I need to talk about is prevention and mitigation. And then obviously preparedness is something we need to look upon. When we talk about prevention and preparedness, it is said that organizational response planning is something we need to start from. Okay, and for that matter, it is not just a planning document. We need to develop certain policies. We need to develop certain procedures. We need to develop certain SOPs. We need to develop, certain feed forward controls के जिनकी साथ हम अपने situations की vulnerability को, अपने impact को वो कम से कम कर सकें. Okay, so government structure and disaster legislations बाजुकात हमें available हो जाती हैं. Planning mechanisms में stockpiling, awareness, resources की detail, उनकी availability, उनकी बारे में complete planning, communication networks, आपके जो बैकअप प्लान्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन के हवाले से भी आपके जो बैकअप प्लान्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट इफ the first communication network fails, so what is the second communication network, what is the third communication network. और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिजास्टर और क्राइसिस से रिलेटेड एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, एंड दैट वाज द लॉस ऑफ डेटा. ओके, आपके मेन सर्वर क्रैश डाउन कर जाते हैं, आपके मेन नेटवर्क जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. सो टॉकिंग फ्रॉम अ बैंक पर्सपेक्टिव, moving to the other industries of the environment, you would know कि बेशुमार तरह के problems they can take place. तो आपके जो backup plans होते हैं, आपके जो recovery plans होते हैं, they are all actually the parts of prevention and preparedness. Okay, so once I was doing my certification of system engineering, and there was actually a full-fledged paper in it, the full-fledged discussion in it, which was related to the recovery and backup plans.
Okay, so if supposedly there is some data to be stored, then how can you come up with the recovery procedures, how can you come up with the backup plans? So ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको डिजास्टर और क्राइसिस से बचाने के लिए वो प्लान की जाती हैं, और इन चीजों को हम इनफॉर्मली ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक फायर फर्नेस के पास काम कर रहे हो और फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको पहले से उसको प्लान करना चाहिए था, पहले से आपको सोचना चाहिए था। So prevention and preparedness में it is said that prevention elimination of hazards, पहली बात तो ये देखी जाती है। उसके बाद mitigation minimize destruction and disruption, आपके पास अगर सर्टेन लेजिस्लेशंस हो, आपके सर्टेन जस्टिफिकेशन कंट्रोल प्रोसीजर्स हो, तो उससे आप कम से कम एक्सपोजर वो अपना ले सकते हो। रिडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी इज रियली डेवलपमेंट, इज रियली डेवलपमेंटल कंसर्न्स में हम उसको पिक करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ, उस केस में हम क्या कुछ कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल लोकेशंस एंड पॉपुलेशंस, डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी रिडक्शन स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथनिंग एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स, जो कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में वो बात करेंगे। नो डाउट कि इसको मैं बड़े लेवल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, बट अगेन हम इसमें से आइडियाज पिक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज के अंदर भी हमारे पास प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस के क्या क्या मैकेनिज्म्स वो मौजूद होंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि डेवलप लोकल लिंक्स टू द एनजीओज, आपके पास एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो सब होने चाहिए। रिडक्शन इन डिपेंडेंस, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि we should not be more dependent on the external constituents, हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए बहुत से एक्शन प्लान्स के हवाले से, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर किसी भी कंसर्न में डेवलप कर जाता है टुवर्ड्स द डिजास्टर सिचुएशन, तो उसको टैकल अप हमने कैसे करना है। अब ये बात याद रखिएगा कि इवन व्हेन यू अप्लाई फॉर द आईएसओ सर्टिफिकेशंस, तो उसमें भी आईएसओ आपका जो 14,000 और 18,000 के कंसर्न्स हैं, दे आर मेजरली टॉकिंग अबाउट हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, और जब हम हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, दे आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फेजेस ऑफ डिजास्टर, अनसीन प्रिपरेशन फॉर दैट कंसर्न, वार्निंग इफ पॉसिबल, impact, emergency response, and from there the recovery, the rehabilitation will be taking place, and from the rehabilitation then we'll be again moving towards the unforeseen events. Now let's talk about prediction and warning aspects of the disaster management. When you talk about prediction and warning aspects, you have to track down the phenomena, you have to develop a proper warning mechanisms, alarm systems हो सकते हैं, कोई आपके warning messages हो सकते हैं, there can be so many ways with which you can come up with the warnings. Organizational responses create किए जा सकते हैं, public education, communication, evacuation planning, अगर उस disaster situation से आपको immediately लोगों को exit करना है, तो वो आप कैसे करोगे। और अब आपको इस बात का भी अंदाजा हो रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में भी जब हम फिजिकल आउटलुक की बात करते हैं, तो व्हाई डू वी नीड टू हैव इमरजेंसी एग्जिट्स, ओके, व्हाई डू वी नीड टू गिव द पीपल ट्रेनिंग कि आपको किसी भी सिचुएशन में किस तरह से कोप अप वो करना चाहिए। तो इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं, कि जिन एग्जांपल्स में वी नीड टू सी कि जस्ट इन केस अगर हम ऐसे एक्सपोजर के सामने आ जाते हैं, तो व्हाट कैन बी आवर रिस्पांस, एंड दैट रिस्पांस शुड बी वेल कम्युनिकेटेड। So emergency responses, as I said, they should be well communicated. अब 4 major phases हैं आपके disaster planning and responses से related. They are basically known as activation, implementation, mitigation and recovery. Okay, and there are so many subcategories of these actions, obviously वो हमारे पास होंगे, और situation to situation हमारी activation, implementation, mitigation and recovery के जो aspects हैं, no doubt they would be varying, और ये vary इस बात पे भी कर रहा होगा कि आपका जो scope of ये सारा study है, वो एक organizational setup है कि वो एक societal concern है, ये obviously हमें उसको उसके मुताबिक ही translate वो करना होगा। The responses, when we talk about responses related to the disaster, so notifications like should be issued, evacuation and extrication, इसके बारे में हमें plan out करना है, search and rescue operations हमें launch करने होंगे,
कोऑर्डिनेशन हमें तमाम यूनिट्स की, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में रखनी होगी। इमीडिएट नीड्स असेसमेंट हमें वो देखनी है और उन नीड्स के हवाले से प्रिकॉशनरी आपके पास ऑलरेडी कुछ बैकअप के अंदर चीजें भी होनी चाहिए। देन शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग डिजास्टर प्लान्स, ये तमाम वो चीजें हैं जो रिस्पांस एक्शंस के तौर पर वी नीड टू लुक अपॉन। So again, I'm referring back to the phases of a disaster: preparation, warning, if possible, impact, emergency response, recovery, and then obviously we'll be talking towards the rehabilitation and aspects. जब हम recovery की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो major concerns आते हैं. One is the logistics, जिसमें के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेयरहाउसिंग, ट्रैकिंग, इन सब चीजों को मटेरियलाइज किया जाता है. एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के केस में हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगेन डिपेंड करेगा कि हमारी ये सारी बहस एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के कंसर्न में चल रही है कि ये एक ओवरऑल सोसाइटल कंसर्न में वो चल रही है. But we have to be vigilant in either case. We have to be planned in either case. And particularly, if you want to research on these aspects, you should be knowing कि इसमें further addition in the contribution in the body of knowledge वो आप कैसे कर सकते हो. So यहाँ तक अब हमने 3 major aspects को वो cover किया. No doubt ये पूरे subject matters हैं जिनको मैं चंद मिनटों में आपके सामने present कर रहा हूँ. We started from change management, which is planned. Then we talked about 2 unplanned aspects. One is the crisis and the severe form of the crisis, which is disaster management. Either case, चाहे आपको planned change management करनी है या आपको unplanned exposures of crisis and disaster के बाद recovery actions लेने हैं, you are exposed to the details of project management. Because एक बात याद रखिएगा कि हर change या हर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव जो हम अंडरटेक करते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ अ प्रोजेक्ट. और याद रखें कि प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू ऑपरेशंस, बिकॉज ऑपरेशंस में एक कंटिन्यूटी होती है, ऑपरेशंस में एक रूटीननेस होती है, जबकि प्रोजेक्ट में हमारे पास कंटिन्यूटी नहीं होती. प्रोजेक्ट में हमेशा एक स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है. जो प्रोजेक्ट होगा वो हमेशा एक्सपोज्ड होगा ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के, एंड दोस ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स आर टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप. ठीक है, ये आपके ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं रिलेटेड टू द लिटरेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिटेल में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली evolved by an organization known as PMI. PMI stands for Project Management Institute. Okay, so Project Management Institute basically issues a document which is known as PMBOK, PMBOK. The PMBOK, the document issued by the PMI, is basically stands for Project Management Body of Knowledge. Okay, so in that Project Management Body of Knowledge, which is actually the PMBOK guide, we are available with the best practices. Okay, issued by PMI, Project Management Institute, जिसमें के दुनिया भर में जितने भी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स वो हो रहे हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनसे जो लर्निंग हमें मिलती है, उसको हम पिमबॉक गाइड में वो प्रेजेंट करते हैं. और पिमबॉक गाइड से फिर बहुत से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, दे कैन टेक द इंफॉर्मेशन, दे कैन टेक द गाइडलाइंस फॉर देयर ओन एक्शन प्लानिंग. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो लिटरेचर है एज डेवलप्ड बाय द पिमबॉक गाइड, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन मैं अब आपसे करने लगा हूं. इसके हमारे पास डिफरेंट versions available है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के. The PMBOK guide is basically the concern issued by the American Institute, which I was referring to as PMI, और जो इसका ब्रिटिश मॉडल है that is Prince2. Okay, लेकिन Prince2 लिटरेचर वो मैं अभी आपसे डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर रहा हूं. I'm focusing upon the PMBOK guide issued by the PMI. So remember one thing, that why now we are going to talk about the project management detail. It is said that any response planning to deal with development, change, crisis, and or disaster requires the understanding of the 9 knowledge domains in the PMBOK. Okay, तो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर के हवाले से 9 डोमेन्स आती हैं, जिन डोमेन्स का ख्याल रखना, जिन डोमेन्स के बारे में अपनी प्लानिंग रखना, वो हमारे लिए जरूरी है. बिकॉज इन आइदर केस वी आर गोइंग टू कम अप विद सम चेंज और क्राइसिस और डिजास्टर सिचुएशन, हमें वो 9 एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना. सो पिमबॉक गाइड ने जो 9 मेन एलिमेंट्स वो डिस्कस किए, उनकी डिटेल पर हम चलते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट पिमबॉक,
That is basically the abbreviation for project management body of knowledge. And it is saying that it basically sums up the knowledge within the profession or project management used to document and standardize generally accepted project management information and practices, produced by the Project Management Institute and revised and reprinted every 4 years. ठीक है, तो हर 4 साल के बाद हमें PMBOK का नया एडिशन वो अवेलेबल होगा, जिसमें कि उन 4 सालों के अंदर फर्दर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, फर्दर जो इंप्रूवमेंट्स आई हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप हुई हैं, उन सब के बारे में अपडेशन वो दी जाती है. So when you talk about the 9 knowledge areas related to the PMBOK, they are project integration management, project scope management, project time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, and procurement management. Okay, so we'll be talking about these things in our next Zoom meeting. Please hurry up and join.